हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है और आज हम बात करेंगे वेरिएशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि वेरिएशन होता क्या है, राइट? तो शुरू करने से पहले इफ आई गिव यू अ डेफिनेशन कि वेरिएशन होता क्या है। सो वेरिएशन इज अ डिफरेंस बिटवीन टू consecutive वैल्यूज, राइट? सो अगर ये x है एक वैल्यू और ये y है दूसरी वैल्यू, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम वेरिएशन कहते हैं, राइट? अब दो फैक्ट्स जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है वेरिएशन के बारे में। जो पहला फैक्ट है कि वेरिएशन इज ऑलवेज प्रेजेंट। सो वेरिएशन इन अ प्रोसेस विल ऑलवेज बी प्रेजेंट नो मैटर which process are we referring to, right? And the second one, we always want लेस वेरिएशन। हम चाहेंगे कि वेरिएशन प्रोसेस में हो ही ना, राइट? सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी नीड टू रेफर टू ऑलवेज, राइट? अब वेरिएशन दो तरह की होती है। द फर्स्ट वेरिएशन इज कॉल्ड कॉमन कॉज वेरिएशन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड स्पेशल कॉज वेरिएशन। चलिए अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, राइट? सो जो कॉमन कॉज वेरिएशन होता है उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, राइट? There is no specific reason for a common cause variation, and it is always inherent to a process. All right. But if we talk about a special cause variation, there will be a special cause that will be there. उसको हम assignable cause भी कहेंगे, right? And this will be external to the process, this kind of variation, right? So apart from that, once we go ahead and check that there is a special cause variation, we'll have to do an RCA, root cause analysis, to check what is the reason behind that special cause variation that we have in, right? This is also called as bad variation. Nobody wants a special cause variation in their process. So this is also called as a bad variation, right? Now, अगर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊं, right? So if we consider this as a bell curve, right? Sorry, this is a distribution, but I wasn't able to draw it accurately, right? So, so x plus 3s यहाँ से लेके यहाँ तक x minus 3s, right? Whatever pointers that we have outside this, right, here or here, these are called special cause variations. Okay. Here as well, this is also called as special cause variation, right? So अगर तो सारे डेटा पॉइंट्स x बार प्लस माइनस 3s के अंदर आ रहे हैं तो देन दैट्स अ स्टेबल प्रोसेस। अगर आउटसाइड जा रहे हैं तो अनस्टेबल प्रोसेस हो जाएगा, राइट? एंड इफ दैट्स अ स्टेबल प्रोसेस देन वी विल से इट दैट इट इज अ प्रोसेस दैट इज कंसिस्टेंट प्रोसेस होगा वो जिसके अंदर सारे डेटा पॉइंट्स एक्स बार प्लस माइनस 3s के अंदर आ रहे हैं, राइट? सो दैट्स अ स्टेबल प्रोसेस और अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. Now, if we talk about the difference between a stable process and an unstable process, so stable process वो होगा जिसके अंदर सिर्फ common cause variation होंगे, and apart from this, if I talk about this process will be called an in control process, right? क्योंकि इन कंट्रोल चल रहा है प्रोसेस, देर आर नो स्पेशल कॉस्ट वेरिएशन, राइट? अगर मैं अनस्टेबल प्रोसेस की बात करूं तो अनस्टेबल प्रोसेस में कॉमन कॉज तो होगा ही प्लस स्पेशल कॉज भी होगा, एंड देन वील कॉल इट एज अ आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, राइट? इफ यू टॉक अबाउट let's say we plot it in a control chart, right? So here we go. Now this is our
x bar. That's mean. Same way, we'll plot it like this. So this is plus 3s. This is minus 3s. Well, s is standard deviation, right? So इनके बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे, that's called a common cause variation. Common cause. And जो इनके बाहर चले जाएंगे लिमिट्स के, then this is called special cause. So this is the difference between a common cause and a special cause variation, right? So common cause हर process में होगी, special cause जो है unstable process में होगी, right? So all data points should lie between x bar plus minus 3s, right? So I hope you understood what we mean by control limits. So these are also called as control limits, right? Upper control limit, this is lower control limit, and this is upper control limit, right? So x bar plus 3s is called upper control limit, x bar minus 3s is called a lower control limit, right? So I hope you understood what variation is, what common cause variation is, what special cause variation is, right? In the next video, we'll discuss about specification limits, what are specification limits and how different are they from control limits, right? So please subscribe to my channel and thank you so much for watching.